Welcome student in second session from your textbook chapter number 14 chemical effect of electric current. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the electric charge, electroscope and lightning. Today we are going to discuss about the earthquake. There are so many phenomena that can cause large destruction, but the weather department can predict its occurrence and can warn before we discussed lightning, but there are certain natural phenomena like earthquake which cannot be detected prior. मीन्स ऐसे बहुत से फिनोमिनन होते हैं नेचुरल जिसकी इंफॉर्मेशन जो वेदर डिपार्टमेंट रहता है, वेदर फोरकास्टिंग, वो पहले से इन्फॉर्म कर देते, बट दैट अर्थक्वेक ये आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो. क्लियर? अर्थक्वेक कैन कॉज lot of damage to buildings, peoples, etc. Okay, so what is earthquake? It is defined as sudden shaking of earth which lasts for short period of time. Means earth जो है वो अपने आप को मीन्स एडजस्ट करती है. Okay, for a short period of time. Talk about its cause. There are so many myths, related to it. But the cause which is most accepted is that the outermost layer of earth is not in one piece. It is fragmented and each fragment is called plate. तो जो outermost layer है अर्थ की वो मीन्स एक पीस में नहीं, वो कैसे प्लेटफॉर्म में. मीन्स प्लेट के जैसे रहती है. These plates are in continual motion. तो ये जो प्लेट्स रहती है वो कंटिन्यूअल कैसे रहती है, मोशन में रहती है. When these plate brush past one another, a place goes under another due to collision which cause disturbance. फिर जब वो एक दूसरे के मीन्स से एडजस्ट होती है, that place goes under another due to that collision, which cause disturbance in the earth crust. तो इसी वजह से डिस्टर्बेंस होता है in the earth crust. Due to this disturbance earthquake occur, that is tremor take place. It is this disturbance that shows up as an earthquake on surface of the earth. The other causes can be tremor on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by the movement of earth plates. Clear? So as you know that earthquake occur due to collision of plates, therefore the boundaries of plates are weak zones. Boundaries of plates are weak zones where the earthquake is likely to occur. The weak zones are called seismic zone or fault zones. Seismic zones are following in India. तो seismic zone कहाँ पे इंडिया में? कश्मीर, western and central Himalaya, the whole northeast, great run of Kutch in district of Gujarat, some areas of South India. जैसे आपने देखा होगा for measuring the fever, that thermometer is there. For measuring atmospheric pressure, that barometer is there. So like that is also one kind of scale is there. So there is a scale that can actually make us familiar with the strength of earthquake. So that scale is called Richter scale, a scale that help in measuring the strength of earthquake. Means ये क्या measure करती है कि कितने strength का earthquake occur हुआ है. मीन्स उससे कितने डैमेजेस हो सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ से ही आप पता कर सकते हो कि वो कितना डिस्ट्रक्टिव नेचर का है और कितना नहीं है. So really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. So both the Bhuj and Kashmir earthquakes had magnitudes greater than 7.5. Clear? Now seismic waves. The tremors produce wave on the surface of earth. So these waves are called the seismic wave. तो जो ये वेव रहती है उन्हीं वेव को क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव. द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. इट इज अ वन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन दैट द वेव आर रिकॉर्डेड. द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड. तो ये क्या रहती है? इट इज अ वन काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग रॉड. और ए पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स ऑकर. तो ये क्या करता है? जब भी ट्रिमर आता है तो ये जो पेंडुलम जैसा है तो ये स्टार्ट कर देता है वाइब्रेटिंग व्हेन दैट tremors occur. A pen is attached to the vibrating system. वहाँ पे एक पेन अटैच रहती है to that vibrating system. Look at that figure. So the pen records the wave on paper. तो वहाँ पे मीन्स पेन जो है वो वेव रिकॉर्डेड करते रहती है. Which moves under it. So by studying this wave, scientists can construct a complete maps. So फिर जो साइंटिस्ट रहते हैं
वो स्टडी करते हैं इस वेव को, ओके, एंड कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक, और फिर जो है एक कंप्लीट जो मैप उसको डिजाइन कर देते हैं, ओके। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट द पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, और जो उसमें रिकॉर्डेड होती है तो उसी के थ्रू साइंटिस्ट ये भी मीन्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, कितने पावर का है, तो ये भी उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ओके। नाउ प्रिकॉशन अगेंस्ट अर्थक्वेक, ओके, फर्स्ट है इन सिस्मिक जोन, all the buildings in this zone is designed in such a way that they can withstand tremors, means जहाँ पे सिस्मिक जोन्स लोकेट होते हैं तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, ओके, तो इस तरीके से मीन्स डिजाइन की जाती है कि ट्रिमर जब वहां पे आता है तो इजीली उसको बेयर कर सके, ओके। एग्जाम्पल, consult qualified architect and engineer. In this zones, use of mud and timber is better than using heavy construction material. It is better to fix cupboard and shelves into walls. Be careful while hanging clocks, photo frames, etc. All buildings should have fire fighting equipment, as due to tremor the fire may take place, okay. Now precautions, so if you are at home, take shelter under a table and stay there till the shaking stops, okay. Stay away from tall trees and heavy object, or if sleeping on bed then do not get up, protect your head with pillow. If you are outdoor, agar find a clear spot away from buildings, trees and overhead power lines, drop to the ground. If you are in car or bus, do not come out. अगर आप कार और बस के अंदर हो तो उसे बाहर नहीं आना चाहिए. Ask the driver to drive slowly to clear spots. Do not come out till the tremors stop.